ओके, सो लास्ट लेक्चर तक हमने ये देखा था कि किस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट का जो मिनी प्रोजेक्ट हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें ब्लॉब स्टोरेज में रॉ फाइल्स थी, उसको हमने CSV से पार्केट में कन्वर्ट करके एक दूसरे कंटेनर में स्टेजिंग नाम का कंटेनर में पार्केट फॉर्म में सेव कर लिया था यूजिंग ADF, ठीक है। एंड देन हमने इस पूरे प्रोसेस को डायनेमिक भी बनाया था बाय यूजिंग अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड एक ऑप्टिमाइज्ड लाइक इंजेक्शन पाइपलाइन जैसा हमने एक स्टेजिंग पाइपलाइन क्रिएट किया। अब हमें नेक्स्ट फेज़ ऑफ द प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है, जिसमें हमें क्या करना है, हमारा डेटा ब्रिक्स का सेटअप करना है, जिसमें हम इस स्टेजिंग फाइल्स को रीड करके प्रोसेस करके एक प्रोसेस्ड फाइल जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पे दोबारा हमारे ADLS में सेव कर देंगे। एंड देन यूजिंग ADF वी विल मूव दैट फाइल इनटू Azure SQL table. So let's quickly set up our Databricks environment. So let's go to our cloud. So this is our cloud, and यहाँ पे let's first create our Azure Databricks. So in order to create Azure Databricks, you need to click on create resource and then select Azure Databricks. तो यहाँ पे create resource and then search for Databricks. So in this, I'm just gonna search for Databricks here in the marketplace, and then you will see Azure Databricks. Click on create Azure Databricks, and after clicking on create we have resource group. तो resource group में अपना YouTube कंसोल पर ADF YouTube द सेम रिसोर्स ग्रुप जो हम पहले यूज़ कर रहे थे वही मैंने यूज़ किया। वर्क स्पेस का कुछ एक नाम देना है, सो लेट्स गिव इट CF ADB YouTube. ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग दिस नेम एंड देन उसके बाद यहाँ पे रीजन वगैरह सेलेक्ट करेंगे। सो प्राइसिंग टियर, प्रीमियम एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से यू कैन चूज़ अ ट्रायल फॉर प्रीमियम का ट्रायल ले सकते हैं। स्टैंडर्ड Spark using Microsoft Entra ID, you can choose whatever pricing tier you want. I'm just gonna go with premium for now, and then just create managed resource group name. So this is kind of optional parameter, so ये fill नहीं भी करोगे चलेगा। Then click on next. Deploy Azure Databricks with secure cluster connectivity with no public IP. No, so हमें public access चाहिए, so I'm just gonna keep this like this. Encryption will be also default, and this will also be default, and then we'll just click on review and create. So after a few minutes it will create the Azure Databricks resource. After clicking create here, it's now doing the deployment for us. So let's wait for a few minutes. Okay, so after a few minutes हमारा Azure Databricks का जो resource है वो create हो गया है. We will click on go to resource, and then we will click on launch workspace. So this will open our Databricks workspace environment. Okay, so workspace is ready. The first thing that we need is our compute resource, यानी कि हमारा cluster हमें create करना पड़ेगा सबसे पहले. So we will click on create compute, and then let's create a single node. Let's keep it very minimal, and single user is fine. This will be 4 cores, 16 GB. Let's keep this as minimum, and yeah, these look fine to me. And there is a Proton accelerator, we just want to disable that, we don't need this. And this has Unity catalog features, so it's fine. Click on create. Okay, so while this is getting created, let's quickly set up our notebooks जिसको हमें run करना है using ADF for processing the tables. So we will click on workspace on the left side, and inside this workspace we have shared. So inside this shared, okay, let's click on workspace here, and inside this workspace click on create, and then you can create notebooks here. I'm just gonna create a folder for now, right out in the workspace folder, and I'm just gonna call it sample. Okay, let's call it ADF project or something like that. Okay,
and then this is the folder, and inside this folder मैं यहाँ पे कुछ notebooks create करूँगा. बट जो सबसे पहला नोटबुक मुझे क्रिएट करना है दैट विल बी सिंपल यूटिलिटी नोटबुक जिसको हम कॉल करेंगे. सो क्लिक ऑन दिस नोटबुक, एंड इस यूटिलिटी नोटबुक में देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, सो दैट वुड बेसिकली हेल्प अस इन द लॉन्ग रन. सबसे पहला चीज़, लेट्स कॉल इट यूटिल्स, एंड देन इन दिस यूटिल्स वी विल हैव the code. Okay, so the first code that we want to write here is basically to create the mount points create करने हैं हमें, and then एक बार जब mount points create हो जाएंगे उसके बाद we will be able to read it. Okay, so this is the utils notebook, and inside this we'll create a function called as create mount or something like that, and I'm just gonna generate all these like code using AI for now, because I don't want to get stuck with the Databricks development, and because अभी हमें ADF का project focus करना है, तो ADF is more important for us. Databricks हम लोग quickly wrap up करेंगे यहाँ पे. So here there is an option for toggle AI assistant. You can click Control I also. Okay, so that's this. So I'm just gonna click on toggle AI assistant and just say create a function to create a mount point to Azure blob storage, make it generic with parameters. Okay, so let's make that. Okay, so it's giving me this code, storage account key and all those things it is giving me. I'm just gonna click on this, so it has given me this, and then we are just gonna add another check, add checks to recreate mount if mount already exists. Okay, so it's done. So basically अभी ये क्या करेगा कि based on the parameter it will check कि अगर जो हम mount point बनाना चाहते हैं वो mount point exist करता है कि नहीं. अगर वो mount point exist करता है it will like unmount that mount point and then recreate that mount point. अभी हमें बस ये storage account name, container name, mount point और storage account की ये कुछ parameters हमें provide करने हैं, and यहाँ पे हम storage account की और storage account name ये सब मैं अभी for now hard code करने वाला हूँ. I'm just gonna keep the mount point here as a first parameter, and rest of the things I will make them optional. Storage account name and ये सारी चीज़ें हम यहाँ से copy करेंगे. So we will just go to storage account, this one, and यहाँ पे जाके we have overview, and inside this overview we have the resource group, and then we have the subscription ID, and then here we should have our resource details somewhere. So let's see where it is. Click on JSON view, and when you click on JSON view you will get all these details. So endpoints, storage accounts. Okay, yeah, this is the storage account name, CF beauty of ADF kind of. This is the name of the storage account, and then we will just put the storage account name equal to like this for now, and container name we can mention it here. So this we can also make it as a parameter for this part like this. तो कंटेनर नेम भी हम पास करेंगे, माउंट पॉइंट भी पास करेंगे, स्टोरेज अकाउंट की हम लोग अभी हार्ड कोड करने वाले हैं. And don't worry, I'm just gonna even though you see the storage account key and all those things, you won't be able to use it क्योंकि मैं ये सारे resources remove करने वाला हूँ after this video is completed. So let's okay. So let's add the storage account key. So where is the storage account key? So if you come here, there are some properties. Let's see if we can find the key.
Okay, key resource, key 1, allow shared access key. Okay, let's go on the left side and try to create settings, and then we have endpoints. Here we have, okay, these are primary endpoint, secondary endpoint. Okay, I'm really forgetting this, कहाँ पे होता है. Okay, list storage account keys. Data management, security, networking, access keys. Okay, so here we have the access keys on the security and networking tab, and here we have the key 1 and connection string and all the stuff. So you can use any of the keys. I'm just gonna use this key here, so just copy this entire key, go to our Databricks and put that value there. So अब ये हमारा value हमें optional हो गया. अब ये जब भी हमें mount point बनाना होगा, we'll just call this create mount point function and it will do that for us. So remove this, and this is our utilities notebook, and let's run this here. Okay, so let's see if we have the cluster available for us. Yeah, cluster is ready. Now here we will just call this create mount point, create mount function. We will pass the parameters like this /mnt/youtube ADF like this. So अभी हमें एक source के लिए बनाना, एक हमारा staging जो है container उसके लिए बनाना है. Container name is staging. Okay, so we will call it like this, and then we will run this. So ये एक mount point बनाएगा, which will, this /mnt will point to the staging container. Okay, so let's wait for that to complete, and then let's create another for processed. Okay, so this is the processed point. Click on run. It's running, it's creating the mount points. Okay, so now let's quickly check if we are able to access these mount points. So I'm just gonna use %fs and do a list on that mount point, and if it is working, it हमें list of file folders and सब कुछ details आ जाएंगे staging container का. Let's see. Okay, so हम यहाँ के सारे folders and files हम देख सकते हैं, which is working. Processed वाला भी, let's check that. So that is also working. Abhi currently the processed container is empty, so it's we don't have any data there, but yeah, we know that this is working. Now अब ये जो create mount point है, ये हमें बार बार नहीं करना है, हमें इसे एक ही बार करना है. So we will do this in a different notebook. So this is utilities notebook. This utilities notebook में हम normally सारे functions का definition रखते हैं, so that whenever we need it, we can call it anywhere. And here we will create another notebook called init. So init will be doing our all the setup for the environment. So init, let's call it init. Init में let's give it a, let's call those functions here, call this utils notebook there in fact. So I'm just gonna use %run, and then just gonna call this utils. So /utils, so it will call that utils notebook. तो यहाँ पे पूरा notebook run होगा, और इस utils से हमें ये create mount point वाले code को remove करना है. So just need the functions there. और init notebook में we will call this function. So let's click on interrupt for now, and then run it again, and then we will add this also. Okay, so this is done. Run all. So this will do that staging and processed mount point creation. And then few more setups we need to do. We need to create 2 databases. So यहाँ पे if you go to catalog, you will have few options like CF YouTube catalog is there. There is a system catalog. Then all those things are there. So inside this CF YouTube,
and then default we these are few of the schemas of the database. So inside cf youtube adf cf adb youtube, okay, cf adb youtube, this is the catalog name. Inside the catalog we will have databases, and inside databases we will have our tables. So these are some tables. So this is like all the unity catalog features here. Okay, so unity catalog tables are there, and then यहाँ पे हमें टेबल्स को क्रिएट करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए. सो मैं अपने जितने भी स्टेजिंग वाले टेबल्स होंगे रॉ जो हम लोग प्रोसेस करने के लिए यूज़ करेंगे, उनको मैं एक स्टेजिंग डेटाबेस के अंदर रखूँगा, और जितने भी हमारे प्रोसेस डेटा होंगे उनको एक मैं लाइक प्रोसेस्ड या फाइनल या इस तरह का कुछ एक क्रिएट करेंगे. सो लेट्स कॉल इट मार्ट डेटाबेस टू बी स्पेसिफिक. So okay, so let's go to workspace again. Let's go to the notebook here. So ADF project and then init notebook. Okay. So here we will create our database and stuff. So click on let's write the code, and we are going to use Spark SQL for most of the stuff. Create database if not exist, and let's give a database name. So हमारे पास एक कैटलॉग है which is called cf adb youtube. Okay, that's the default catalog name. Okay, and then you can put dot database name staging dot and dot staging. So basically ये क्या करेगा, cf adb youtube जो कैटलॉग हमने देखा था उसके अंदर हमें एक डेटाबेस बनाएगा which we call as staging. और you can directly you like do something like this, create database if not exist, but वो तब वो default के अंदर बनेगा, right? So there is another default catalog, but we want to create it inside this. So cf adb youtube dot staging, this is one database, and the other one is mart. Okay, so we'll just run this. Okay, so this is our init. कि हमें एक बार रन करना है, बार बार नहीं, पूरे प्रोजेक्ट में. And then we will add our staging notebooks. Okay, so let's create a folder for staging, and then let's create a folder for mart. Okay, so staging and mart. So inside staging we will create a notebook, and दिस नोटबुक इस स्टेजिंग नोटबुक में हम 2-3 टेबल्स को रीड करने वाले हैं, और उसका लाइक 2-3 फाइल्स को रीड करेंगे. फाइल्स को रीड करके उनके टेबल्स क्रिएट करेंगे उसी स्टेजिंग वाले डेटाबेस के अंदर. ओके, सो फर्स्ट नोटबुक दैट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट इज़ फॉर डिम डेट. ओके, सो डिम डेट, सो इसका नाम हमने डिम डेट रखा है क्योंकि हम डिम डेट टेबल को रीड करने वाले हैं. So how we are going to do it is we are going to just write spark, okay, df equal to spark dot sql, and just gonna not the spark dot read, and then dot format, and format में we have parquet files, तो parquet, and then यहाँ पे हमें उसके parameters वगैरह देने हैं. So just gonna put load and then all these parameters. So in this mnt slash staging slash inside staging container हमारे पास wwi folder है, और folder के अंदर फिर हमारे पास dim date dot parquet file है. Okay, this is that, and then we can add a few more parameters here. Option info schema, okay, true, info schema is true, ताकि वो अपने आप को डेटा टाइप्स वगैरह आइडेंटिफाई करे. And then we just run this. So when it will run, it will get the data in the df, and df dot display अगर हम करेंगे तो हमें दिख जाएगा डेटा. Let's run this. Okay, this path does not exist, it's saying. Let's see क्या फाइल है हमारे पास. So हमारा mount point already created है, so we can just do a percentage fs and then ls mount staging.
Okay, it's giving me the staging mount point, but let's see where it is. Let's go to our init notebook and see what we have done. Okay, it's saying staging has been unmounted. Yes, that's the problem. इसको हमें process पे point करना है. Okay, let's run this again. Once this completes, we should be able to get the staging has been unmounted, and then it will remount it with that staging. Just wait for a minute. Okay, now I think it's done. Staging has been done. Let's run this again. We will get the list of directories. So ये है wwi के अंदर folders होने चाहिए. Now let's run this bottom code. Okay, we got the data, and let's run this df.display. So here we have our data, right? So ये हमें data मिल गया यहाँ पे. Now in this we have this date column. इसमें हमारे पास जो values हैं, these are in string format, and इसका format जो है mdy format में है. So this is first value is month, and then we have date, and then we have year. So let's first change this columns into string. Okay, so that would be much better. And in order to do that, so there's a better way to handle this. So what we will do is we will create the table schema. Okay, so what we will do is set this smart and not in the staging. Yeah, so हमने dim date बनाया, तो यहाँ पे dim date के अंदर we will write our code to create the table first. Okay, so let's remove this cell. Let's add a cell for, okay, let's add text here, and we will just add a heading for dim date so that we know that we are processing dim date table. Okay, dim date, and then हम create करेंगे. So create table if not exist, and we will create the table named, okay, cf youtube adb. I know that cf adb youtube. I think ये हमारा catalog का नाम है. dot staging. Let's check the catalog first कि वो schema बनाया कि नहीं. Okay, cf adb youtube के अंदर staging और mart नाम का दो डेटाबेस बना हुआ है. तो हमें इस staging के अंदर एक टेबल बनाना है जिसमें हम schema को पहले से प्री डिफाइन कर देंगे. So let's try that. Okay, so where's our dim date? Yeah, तो यहाँ पे staging dot dim date नाम से टेबल बनाना है हमें, and उसका schema हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं. Okay, so in order to create the schema, what I will do is I will use this df to quickly generate the schema. Okay, so I'm just gonna use AI again. Create a function to generate create table command for a df. Okay, so this is what we have here. Click on accept, and then we're just gonna put this back into our utils notebook. We can do that. Just copy this here into the utils, so that अगर future में हमें ज़रूरत पड़ेगी, we can just call this utils. So this is going to do that, and then for now just call the utils notebook on the top. For
%run dot slash dot dot slash. So we will go back one directory and then we will call the utils. Okay, let's run that. We executed that and then we need this create table command, right? So create table command के लिए just need to copy this and put it here. And in fact we can put the print right over here. Okay, so let's run this. Okay, तो हमारा df ये defined है, इसने ये create table command दिया है, and just gonna copy all this and just gonna change the data types wherever needed. So in this we will mark this as date, data type will be date, and this will be day number is string, that's fine. Rest of the things are fine, rest of the things are not very big deal. तो अब इतना अगर रन करते हैं, so this will create our table, and then what we want to do is we want to insert the data from this df into that particular table. Okay, insert into table from df. Use Spark SQL. Use Spark SQL. Okay, so this is how we normally do it. So इसको accept करेंगे. So first we create a temporary view from this df here like this. उससे हमें ये एक temporary view बना के देगा temp dim date नाम से, and then we can run our SQL code. तो मैं यहाँ पे direct %SQL से just gonna do something like that, insert into, because हमारा table already created है, right, this one. So now we can just do insert into this, and then we can put the column names, right? So we can put the column names here. Column names are this, right? And then we can do values, or we can values, instead of values we can just also do select and start from temp dim date, right? Something like this. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि कॉलम नेम स्पेसिफाई करना है किस कॉलम में क्या जाएगा. सो लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन, create a function to give the list of column names from df. Okay, def column names, let's run this. Accept, go to this notebook here, run the utils again. तभी हमारा वो column available होगा, get column names, and we can just do df columns. Okay, so we have this df and then get column names, and we will pass df here, and then we will just run this. तो हम देखना चाहते हैं df में क्या क्या column names हैं. So these are the column names. We'll just copy this and put it here. Now instead of these single quotes, I will just remove them for now. Control H, not Control H. I think I can replace this like this. Control D and then click backspace. तो अभी हमारा column names आ गया है, and we will do this like this. Click on backspace again. So list of column names हमने यहाँ पे डाल दिया है. अब यही list of column names हमें यहाँ पे चाहिए, like this. Okay, so that's what we are doing, and then we will just do it like this, so that हमें पता हो कि हम किस कॉलम में क्या वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं. डेट की डेट, डे नंबर में डेट. नाउ इन दिस डेट कॉलम हमें इसको बस किसी तरह कास्ट करना है. ओके, सो
cast date column to date by converting from a given date string format, right? Something like this. So it's doing cast date as date, but we don't want to do that. Use create from format. Okay, so now it's having this here. अब यहाँ पे ये जो कास्ट लगाया है इट माइट नॉट वर्क फॉर अस बिकॉज उसमें डेट का फॉर्मेट इतना स्पेसिफाइड नहीं है. सो लेट्स ट्राई टू यूज़ SQL. Okay, Databricks SQL create from string format. Okay, so we can use the toDate function. Okay, toDate, and we can specify the format. So let's use that. So use Control I, use toDate function. Okay, so now we have done that. अब यहाँ पे हमें बस फॉर्मेट मेंशन करना है. सो फॉर्मेट इज m/d/yyyy. ओके, सो नाउ if we run this it will work. ओके, ये लास्ट में बस फ्रॉम टेम्प बार बार आ गया है. उसको रन करते हैं. You can do all these things in like Python code also, but I prefer using Spark SQL, so I'm doing that. Now if we check our table, which is this one, like this, इसमें हमें डेटा मिलना चाहिए. Select star from this. So इसमें अभी क्योंकि डेट वगैरह हमने डिफाइन किया हुआ था. Okay, now it's not giving us. Okay, it's inserted as null. Let's see why. Let's try to run this select command first. And let limit 10. It's not working. toDate is not working. Okay, I know what's the problem. हमने जो फॉर्मेट दिया है वो गलत है. So format is not m hyphen, it's m slash. So run this again. So now we are getting the proper date values, right? So this need to change this hyphen to slash, like this. Okay, now क्योंकि अभी हमने इसमें insert लगाया है get column names, we just now ran it. We can remove this now. Now here we have this insert. तो insert से पहले हमें टेबल को क्लियर भी करना पड़ेगा ताकि अगर ये नोटबुक दोबारा रन हो तो हमारा जो डिम डेट टेबल है वो क्लीन हो जाए एंड देन फिर से री इंसर्ट करें. दिस विल इंश्योर कि हमारा जो टेबल है उसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं है. ओके, सो यहाँ पे और अदरवाइज वी कैन जस्ट ड्रॉप एंड रिक्रिएट ऑल्सो. वी कैन डू दैट प्रोसेस. सो लेट्स डू दैट. इन फैक्ट लेट्स create a drop create instead. %SQL drop table if exist and then give this name there, and यहाँ पे we can remove the if not exist check because यहाँ पे हम drop कर रहे हैं. We'll drop that and then this will be date, and we can also make this as primary key, okay, because date is unique here. Then run this. Okay, now it's executed. DF we are running, and then we run this again, and then we will run this. तो अभी हमारा
डिम डेट टेबल में डेटा आ चुका है और ये डेट कॉलम में वैल्यूज़ भी सही है. ओके, so now we are just gonna do this again for one more table in the staging notebook. यहाँ पे we will create one for our fact sale. ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए ये select वाला कमांड यहाँ से मैं हटा भी सकता हूँ, बट for now I'm just gonna keep it, and ये पूरा notebook मैं क्लोन करूँगा. So just gonna click on clone and we will do this for fact sale. Fact sale clone. तो fact sale नाम से notebook बना दिया. Just gonna replace all these things. Fact sale. Okay. And इस dim date में हम ये वाला print command हटा सकते हैं. We don't need this here. Okay, that's done. Fact sale. Then for fact sale, we just need to read from fact sale. So let's run the fact sale data. ADF we will create here. Fact sale. And while this is running, we will also call this function here. Run this utils once, and यहाँ पे fact sale table के लिए we will generate the command. Okay, so we have got this create table command. इसको copy करते हैं this, and then we will call fact sale here. And then we will put the command here. और यहाँ पे हमें कुछ कॉलम नेम्स को चेंज करना है, बिकॉज जो पाकेट फाइल है उसमें स्ट्रिंग है, बट हमें टेबल में प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए. तो यहाँ पे जैसे क्वांटिटी जो है इसको मैं इंटीजर कर दूँगा. यू कैन मेक इंट, एंड देन पैकेज एंड ऑल दिस थिंग्स आर फाइन. प्रॉफिट विल बी डेसिमल, so decimal, and we'll put the size here, so 10,2 like this. Then we have total excluding tax. This will also be decimal. Tax amount will be decimal. Total including tax decimal होगा. ये integer होगा. ये integer होगा. Lineage key we can keep it like that. Tax rate will be decimal. Unit price will be decimal. And invoice date key, this will be date, and delivery date key will be date. Bill to customer key and all those things are fine. Okay, so now we can just run this. तो ये एक टेबल क्रिएट कर देगा हमारे लिए. And then just do a df.columns. I have these column names here. Just copy that, put this here like this, and replace all this exclamation mark. Select and press Ctrl D, तो अपने आप वो select करेगा सब कुछ. We'll remove this we need it here, so उसको नहीं करना है remove. Okay, so these are the columns where we are inserting, and इसको select में भी डालना है. So we'll just put it here into select this, and ये वाला command we will just copy and replace the date वाला part. तो invoice date की में यहाँ पे replace कर देंगे इसको. So invoice date की, क्योंकि invoice date की में भी same वही like data का issue है. जो column है वो इस format में है, string format में, हमें date में convert करना है, so we will need to use toDate function. And then we will copy this thing and paste it here and paste it here. Rest of the things will work, so we can just run this now. And this will be fact sale. Okay, temp date नहीं होगा, ये temp fact sale होगा. Fact sale, and then insert into will also be fact sale.
run this again, run this, and let's see if the data is there. Okay, so हमारा जो डेटा है आई थिंक लोड हो चुका है. वी कैन सी द डेटा हेयर. डेट में डेटा है, बाकी में स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक जहाँ पे भी ज़रूरत था वी हैव मेड दैट चेंज. सो नाउ इट्स वर्किंग. नाउ व्हाट वी विल डू इज़ we will just try to run all both of these notebooks in the staging pipeline. So let's go to our ADF. So ADF में after we do the staging notebook we will run after we do the copy activity we will run the staging notebooks here. So यहाँ पे हमें staging notebooks को run करना है one by one. तभी मैं can also like हम ये वैल्यूज़ भी हम अपने रीड कॉन्फ़िग वाले पार्ट में भी प्रोवाइड कर सकते थे किस नोटबुक को रन करना है, नोटबुक का नाम क्या है, देन वी कैन मेक अ जेनरिक हेयर इनसाइड दिस फॉर इच. बट फॉर नाउ वी विल जस्ट मेक इट स्टैटिक. सो वी हैव नोटबुक एक्टिविटी. तो हमें क्या करना है, ADF से इस नोटबुक को जो डेटाब्रिक्स में नोटबुक है उसको रन करना है. सो विल कॉल दिस नोटबुक एक्टिविटी. सो ये वाला डेटाब्रिक्स नोटबुक एक्टिविटी. सो फर्स्ट वन इज़ dim date. Okay, so dim date underscore staging or something. Okay, सो हमें dim date को रन करना है. लेट्स नॉट कॉल दिस अंडरस्कोर staging. एंड देन डेटाब्रिक्स में यहाँ पे कनेक्शन सेट करना पड़ेगा, कौन सा कनेक्शन यूज़ करना है. तो इसके लिए हमें एक लिंक सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा डेटाब्रिक्स का जो हमारे डेटाब्रिक्स एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेगा. क्लिक ऑन न्यू एज और डेटाब्रिक्स वन. यू कैन कॉल दिस वट एवर यू वांट. एंड सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करके वी विल सेलेक्ट आवर डेटाब्रिक्स एंड इट विल ऑटोमेटिकली select these options. So now here you can choose new job cluster or you can choose an existing job cluster. I will use existing job cluster. And then we have access token and all these things. So यहाँ पे we will go to our Databricks environment और यहाँ पे account में जाके from this side we will have go to click on settings, and settings में we will need to create our access token. Okay, so यहाँ पे identity and access, service principal, no not that one, development में नहीं, इसमें भी नहीं होगा. Access token. So on the left side users, developer, click on access token, click on manage, generate new token. Okay, so let's call it ADF token. Okay, and expiry will be 90 days. You can put whatever you want. Copy this value and then go to this part here, ADF, put the access token there. Okay, but in production you would normally want to keep this in Azure keyword. मतलब कीवर्ड में रखेंगे, कीवर्ड से फिर फैच करेंगे ताकि ये कोई भी चेंज ना कर सके यहाँ से और कोई किसी को भी एक्चुअल की वैल्यू दिखे ना. एंड एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स में क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट दिस क्लस्टर एंड देन टेस्ट कनेक्शन. Okay, test connection is working. Click on create and then we will just connect this like this. तो सेम चीज़ को डुप्लिकेट करके we will do this for fact sale. So just rename this to fact sale. और इन दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है आपस में. just need to select the notebooks. So settings में जाएंगे, इसमें अभी settings में जाके we will select our notebook. So यहाँ पे go to browse and then in the browse we will select our ADF project folder और यहाँ पे हमारा staging के अंदर we will have dim date. इसको कॉपी करके इसमें यहाँ पे पेस्ट करेंगे सेटिंग्स में और इसको रीनेम करके फैक्ट सेल नोटबुक का नाम रख देंगे. Now if we run this entire pipeline, सारा डेटा कॉपी करेगा, कॉपी करके दोनों ब्राउज नोटबुक एग्जीक्यूट कर देगा, which will work. And before we do all of this, we also need a init pipeline जिसमें वो init नोटबुक को एग्जीक्यूट करेगा ताकि हमारे डेटाबेस और जो माउंट पॉइंट वगैरह है वो पहले से क्रिएटेड रहे. क्योंकि अभी हमने एक बार ऑलरेडी init रन कर दिया तो हमें अभी फ़िलहाल के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट इफ़ यू रन दिस it will work for, it will copy all the tables and then run the dim date and fact sale. इसी तरह से हमें बाकी के टेबल्स को भी लोड करना है हमारे कैटलॉग टेबल में in Databricks environment. But we will do that in the next lecture.